लेकिन जी। ख्वाजा आसिफ की ये बात कहना कि हाँ हम टेररिज्म करते रहे हैं लेकिन अमेरिका और ब्रिटानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, एक हद तक इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे ही की ना, मगर क्यों की बात तो ये है नहीं आपने डॉक्टर साहब, टेररिज्म इसके की। अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो और मैं गलत काम करने आई के एग्री, बाद लेकिन और अब सर 30-40 साल तक करती रहूं और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना, और ये भी नहीं मानते, कैन यू बिलीव इट। कहते हैं कि ये जो अजमल कसाब है ये कोई इनका पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ था पाकिस्तानी, उसको दिखा दिया ये वो, जबकि मैंने कहा नजम सेठी ने खुद करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में वो डिस्कशन में कहा है कि फ्राइडे टाइम्स की टीम गई और उसके वालिद और वालदा को, ये फरीदकोट एक कोई गांव है, उनसे बात की, फिर भी नहीं मान रहे ये पाकिस्तानी। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS, of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together an operationalization of this potent AD environment
has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने विक्ट्री अनाउंस कर दी है तो सर ये अब क्या विक्ट्री अनाउंस की है आई डोंट नो उसको भी अगर ये ना करे तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहे ये अच्छा। बात है ना ये कहे बगैर प्राइम मिनिस्टर कहाँ रह सकता है क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो अगले दिन उसकी छुट्टी करा देंगे अच्छा हमारा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो हैंड पिक्ड है ना ही डजंट हैव अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल मैंडेट लोगों ने पीटीआई को दिया था इसमें कोई शक नहीं है सो इट्स अ स्टोलन इलेक्शन ये भी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है ठीक अच्छा डॉक्टर साहब इसके अंदर एक बड़ा सवाल ये है सर कि अब इंडिया की तरफ से एक बात ये की गई कि अब हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे जी ये एक बहुत बड़ा उनका स्टैंड सामने आया तो क्या इससे ये समझा जाए कि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं है या एक जंग नहीं है कभी भी अभी कोई और ऐसा जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला होता है जैसे कि आपको पता है पहले तो बहुत सारे होते रहे लेकिन उनकी तरफ से स्टैंड इतना शदीद नहीं होता था अब उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा तो क्या अब ऐसा होता रहेगा बिल्कुल अब होता रहेगा और बेहल प्रेसिडेंट ट्रंप से और अमेरिकन से बात ही यही हुई है कि ठीक है सीज फायर हो जाए लेकिन इफ इट हैपेंस अगेंस्ट तो देन वी हैव द राइट टू स्ट्राइक बेहल ये बात जिस तरह इजराइल ने कहा है ना कि वी हैव द राइट टू स्ट्राइक जो हमास ने किया बेहल उसी टर्म्स पे अमेरिकन ने इंडिया की बात मानी है मुझे ये लगता है अच्छा ठीक है लेकिन एक बात है अगली दफा अगर हो तो वी वांट क्रेडिबल प्रूफ कि पाकिस्तान की वजह से हुआ है इस दफा अभी तक एक शक तो है ना कि
क्या पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था या एक कोइंसिडेंटल है कि इधर आसिम मुनीर की वो बेहुदा स्पीच और उधर उन्होंने सिविलियंस की पेंटें उतरवा के देखा कि ये हिंदू हैं और गोली मारी। सो द कनेक्शन इज वेरी क्लोज बट नॉट नेसेसरीली वो क्या कहते हैं कि हुक्म पाकिस्तान से हुआ है, इंडिया कहते हैं अच्छा हुआ है। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो हम बात करते रहे आज तक कि 4 जो जंगें हुई उसमें सारी जंगें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुई और भारत की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया, अ, तो क्या अगर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है या कोई, तो बगैर वजह के या वो जंग करेंगे, नहीं, मैं इतनी तो बड़ी ये नहीं जंग वो कह भी? रहा, लिसन टू मी, मैं नहीं ये कह रहा कि उनके पास नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो एविडेंस पब्लिक में क्या उन्होंने दिखाया है किसी को, अमेरिकन को या किसी को, ठीक है, या ओके, ये मैं कह रहा हूँ कि ठीक है कि वो अभी सामने अभी लाए। हाँ, हाँ, अभी सामने नहीं ना आया कि क्या हाँ, एविडेंस उनके हाथ में है। ओके, ओके, लेकिन ये कनेक्शन तो मैंने पहले ही अपनी, जब ये हुआ था, कह दिया था कि इधर आसिम मुनीर का ये कहना हिंदू मुसलमानों में कुछ ये नहीं है, वो नहीं है। भाई पाकिस्तान बन गया है, मोर देन 2 मिलियन आपके सिटीजन्स हिंदू हैं यार, कोई अकल की बात भी कभी किया करो। लेकिन ठीक है, इनकी पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं है हमारे जर्नैलों की। हाँ, ये अच्छा, ठीक फैक्ट है, है। हाँ, हाँ। ठीक, अच्छा, अच्छा, डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये भी एक बात कि अब ये हो गया और तो रिलेशंस जो हैं बड़े ही खराब हो गए, यानी खत्म ही हो गए। तो अब तो आगे के भी कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि बेहतर हो सकते हैं आगे कभी चल के रिलेशंस? देखिए, जो मुझे समझ आई है बात कि इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की कहीं मीटिंग्स भी होंगी, तो वो एजेंडा क्या होगा? मेरे ख्याल यही होगा कि नो मोर टेररिज्म। हम्म। टेररिज्म हुआ तो फिर हम विल स्ट्राइक बैक। Audio Jungle.